Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार, साथ ही चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic share markets rise more than 1%. Sensex closes above the 55,400 level. Nifty regains the 16,500 mark. Global stock indices log gains following U.S. stock indices after good company results. And Brent crude oil prices slip to $105 per barrel. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक का आया उछाल। सेंसेक्स 55,400 के करीब हुआ बंद। निफ्टी ने 16,500 का स्तर दोबारा किया हासिल। अमेरिका में कंपनियों के बेहतरीन नतीजों से वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी दर्ज और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें फिसलकर $105 प्रति बैरल के आसपास। शुरुआत सबसे पहले शेयर बाजार से। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज हुई। सेंसेक्स 55,400 के करीब बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने 16,500 के स्तर को दोबारा हासिल कर लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.15% की वृद्धि से 630 अंक चढ़कर 55,398 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.1% की वृद्धि से 180 अंक ऊपर 16,521 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.25% का उछाल आया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.42% की बढ़त के साथ बंद हुआ। Sensex and Nifty today gained more than 1%. Both the stock indices rose amid positive global cues. Sensex closed near 55,400 points, while Nifty reclaimed the 16,500 mark. Sensex climbed 630 points, 1.15%, to end at 55,398 points, while Nifty surged by 180 points, 1.1%, to finish at 16,521. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index climbed by 0.25%, while the small-cap index ended 0.42% up. In the Sensex pack, 22 companies posted gains, while 8 companies logged losses. Tech Mahindra was the top gainer as it climbed by 3.8%. HCL Technologies added 3.1%. TCS rose by 2.9%, and Reliance ended 2.5% up. On the other hand, Mahindra & Mahindra tumbled 1.8%. Sun Pharma declined by 0.9%. Kotak Mahindra Bank fell 0.5%, and Bharti Airtel ended 0.4% down. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 13 sectors gained while 6 witnessed losses. The IT sector climbed by 2.6% and tech gained 2%. Consumer durables index rose 1.4% and FMCG sector surged 1.1%. On the other side, oil and gas and telecom both lost 0.6% each. Utilities index declined by 0.4%. Auto and realty, both indices fell by 0.3% each. The overall breadth of the BSE trade was positive, as shares of 1,880 companies gained while 1,459 companies fell. Shares of 150 companies remained unchanged. जी, और घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे कमजोर होकर $79.99 के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.19% बढ़कर 106.89 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। भट्टाचार्य जी, सबसे पहले बात शेयर बाजार की करना चाहेंगे। आज लगातार चौथे कारोबारी दिन बाजार में तेजी रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक का उछाल है। इस तेजी के पीछे क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं, और क्या अब बाजार जो है बड़े उतार चढ़ाव के दौर से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है, और ये तेजी क्या आने वाले सप्ताहों में भी बनी रह सकती है? देखिए, मैं जो समझता हूं, आज की जो बाजार में जो उछाल आया है वो वैश्विक बाजार की स्थिति से जरूर उसमें को एक इम्पैक्ट जरूर हमें दिखा है।
पर उससे ज्यादा जो इम्पैक्ट जो हमारी भारतीय मार्केट में दिखा है, उसका कारण जो एक सरकार ने एक निर्णय सुबह सुबह लिया था, वो तेल कंपनियों की विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया गया है। जो तेल जो यहां से बनाते हैं उनकी टैक्स 27% कम कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट टैक्स जो तेल का जो निर्यात करते थे, उसमें जो पेट्रोल की जो निर्यात करते थे उसमें जो पूरा टैक्स ही जीरो कर दिया गया है, और एटीएफ और डीजल में ₹2 पर लीटर घटा दिया गया है। तो इससे अचानक जो तेल कंपनी और जो ऑयल इकोनॉमी में और ओवरऑल जो मार्केट सेंटीमेंट में एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट हुआ है। मैं मानता हूं कि उसका भी एक इम्पैक्ट, उसका भी एक प्रभाव आज की मार्केट में पड़ा है जी। और तीसरी बात जो हुआ है कि जो अर्निंग सीजन जो हमने देखा है, जो कंपनियां की जो रिजल्ट्स आ रही हैं, अगर आप टीसीएस को भी देखें या हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देखें, तो जो पहले जो इंडिकेशंस आ रहे थे कि जो बॉटम लाइन ग्रोथ में उतना एडवर्स इम्पैक्ट जून में जो एक स्लो डाउन सेल्स के बारे में डर था, उतना नहीं आया है। बैंकों की भी जो व्यवस्था में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन किया है लोगों मार्केट में, बैंक वालों ने, तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा एक स्वीट स्पॉट मार्केट आ गया है जहां वो वही आज की मार्केट में वो दर्शा रहा है। आगे की तरफ हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मार्केट की जो दिशा को निर्णय करने में सहायता देगी। किस तरह से अगले कंपनियों की अर्निंग सीजन कैसी होती है, जो रुपए के ऊपर जो डर जो है, वो डर क्या हम पीछे छोड़ के आ गए हैं, वो निर्णय करेगा। और तीसरी बात, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का रुख कैसा रहेगा, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या डोमेस्टिक फैक्टर्स की जो सप्लाई साइड या डिमांड साइड की जो इश्यूज जो हैं, वो किस तरह से मुद्रास्फीति के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है, उसके ऊपर मार्केट काफी रुख निर्णय करेगा। पिछले 2 कारोबारी सत्रों की अगर हम देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो हैं, वो नेट बायर्स बन के उभरे हैं। और ये अप्रैल का जो दूसरा सप्ताह था, उसके बाद से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो रणनीति में जो अब ये बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या ये बाजार के लिए एक बड़ी राहत की खबर? To cite the figure, today the FIIs were the net buyers to the tune of 1,781 crores, while the DIIs were net sellers to the tune of 230 crores. Clearly, that the domestic retail investors and the domestic institutional investors are probably seeing this relief as short-lived, and they are booking profits. And the foreign portfolio investors are seeing in this an opportunity of parking their money and seeing growth ahead. But if you look at the overall corporate investments and the corporate the investment, and as well as the manner in which they are spending money and the dividend payout ratios, that clearly suggests that the Indian markets as well as the Indian companies are not yet fully sure whether the recovery path is there and assured in the weeks and months to come. What I am referring to is, if the dividend payout ratios go up very sharply, what it clearly shows is that the companies, instead of investing or keeping that money for future investments, they are preferring to distribute that profit among their investors, including the promoters. So the outlook is that probably it is not yet time to invest that money in future assets. So I think today's market trends, as captured by you in your numbers, show that foreign portfolio investors right now see that they probably they see the rupee to not depreciate any further. The crude oil prices have seen the kind of increases, and they don't see a further increase going forward. Some stability in that sense, and corporate earnings
will maintain their trend so far. Having said that, I think the trough are the markets completely out of the woods? I would say we have to wait and watch. These are numbers only for the last couple of days, as Vishalji had said. To draw a firm conclusion based on these 2 days' numbers, I would say it will be too early a call. So the payout has been done by the metal and mining companies primarily. They want to boost the valuation of their stock, and we see that in the FII participation looking at their portfolio. My question is regarding the banking sector, especially with regards to the repo rate. It's at 4.9%. What do you expect the RBI to do? Because looking at the loan book of companies in the bank Nifty, which went up by 252 points today, the loan book suggests that a majority of the loans sold to customers are at a variable rate of interest, not at a fixed rate of interest. So if the repo rate goes up, the bank rate will also go up, and that would be a windfall profit for the bank. So you think it's also based on their quarterly result announced now and what they expect in the future? Well, I think what is happening in the financial sector or the banking sector, to be precise, are a host of plays that are going on. At one level, the banking sector is showing remarkable turnaround in its non-performing asset levels. They've been able to deleverage themselves, and they have been able to bring down their non-performing asset levels very well. They've been able to increase their the credit growth to a healthy level of 13%, which means they are lending more money even at this interest rate levels. The third thing that has happened is that the Reserve Bank of India's dilemma over the trade-off between inflation containment and growth is actually reached a point where there are questions in the market as well as in the banks that will the Reserve Bank of India will continue the same pace of hardening of interest rates going forward. I mean, the August monetary policy review will provide an answer, but just to give you a historical perspective, when the rate declines happened, it was a total decline of around 150 basis points over a period of several months. So far, in the last two credit policy reviews, we have seen one off cycle was an increase of 90 basis points so far, one in 40 and in 50. Now, which means that if the Reserve Bank of India will have to come back to the pre-decline status, they have to increase the rates by another 60 basis points. So I don't see that, and nor does the market fear any steep hikes going forward. Maybe a 30 basis point increase in August and another 30 basis points in October, and that will be coinciding with the festival season. So the markets are probably seeing some sort of certainty in the direction that of the key macroeconomic variables that you're seeing. On the one hand, rupee, on the other hand, the crude oil price, on the other hand, what will the Fed do there. So instead of 4 weeks ago, complete uncertainty, today you have greater certainty, even though not each and every item of the news development is positive. And also looking at the Fed's whether they will raise interest rates or not, that has a direct impact on the way the FIIs then bring their flow of money to purchase stock in our economy. How do you see that correlation? Because right now the FIIs are net buyers in the economy. They're seeing value in the stock purchase, but back home inflation is a concern. The Fed is likely to raise the cost of borrowing. What do you think is going to be the net result of this? Well, let me say that we should not be drawing conclusions based on numbers for a couple of days. What we should do is we should look at the numbers over a period of time, and a good yardstick would be what has been the level of sales or level of purchases by both the FPIs and domestic institutional investors. And if you see that what the foreign portfolio investors have pulled out in the year to date
is broadly just little less than what the domestic investors have put in. So the net impact has been negative, but it has not been hugely negative. My sense is that going forward, if the last 2 or 3 days developments are an indication, that gap will narrow down further, and which will provide some sort of positive support and positive sentiment to the market mechanics in the days to come. But let us hold our horses here. Crude oil prices, you do not know which direction it will take. Inflation trajectory, hopefully it will stay stabilized, because it is already, if you look at the May figure and the June figure, they have been seen a declining trend, and we haven't seen as yet any negative news on inflation. So inflation trajectory may come down, but still at a level which is higher than the upper band limit of Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee of 6%. So therefore, these are the factors that will weigh heavily on the way the markets behave in the days to come. जी, आपने भट्टाचार्य जी कंपनियों के नतीजों की बात की, अब आने भी शुरू हो गए हैं जून तिमाही के नतीजे, और आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में 1.1% का उछाल आया है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो जून तिमाही के नतीजे हैं वो काफी अच्छे उत्साहजनक नतीजे आए हैं। आशंका यही जताई जा रही थी कि जो बढ़ती मुद्रास्फीति है और जो उसका खपत पे जो असर है, उसके चलते नतीजे थोड़े से डाउनवर्ड्स हो सकते हैं। एफएमसीजी क्षेत्र के लिए आप मध्यम से लंबी अवधि में क्या संभावना देख रहे हैं? जो मौजूदा परिस्थितियों में जो डर एक तरह से जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर में की जो ग्रोथ रेट से आ रहा था, अगर आप मई तक की आप अगर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर की ग्रोथ देखें, वो बहुत धीमी थी, नरमी आई थी कंपेयर टू कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर लार्जली एफएमसीजी सेक्टर को कहते हैं। उसको अगर आप ये जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी के रिजल्ट, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट हमने देखी, अगर आप कंपेयर करते हैं, उससे ये लग रहा है कि जो एफएमसीजी कंपनीज की जो डर था कि प्राइसिंग पावर शायद वो खो चुके हैं, लगता है कि प्राइसिंग पावर उतना वो खो नहीं चुके हैं। हालांकि चीजों के दाम बढ़ गए हैं, उनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हुई है, पर ये सारे कंपनियों ने अपनी जो बॉटम लाइन ग्रोथ को प्रोटेक्ट की है, और मार्केट उसी की जो रिकॉग्नाइज करके आप एफएमसीजी सेक्टर की जो इंडेक्स की जो उछाल जो आया है वही आया है। और मैं समझता हूं कि एफएमसीजी सेक्टर के उछाल के साथ साथ एक रूरल इकोनॉमी के साथ भी एक ओतप्रोत संपर्क है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में अगर डिमांड बरकरार रहे, रूरल इकोनॉमी की इनकम अगर जिस तरह से अगर बरसात के बाद अगर क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग ठीक से रहे और रूरल इकोनॉमी की डिमांड इंटैक्ट रहे, तो एफएमसीजी सेक्टर की अगले 2-3 तिमाही की जो रिजल्ट्स ठीक होनी चाहिए, और वो मार्केट के लिए एफएमसीजी सेक्टर इंडेक्स के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित हो सकता है। वेल, वी हेडिंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन मार्केट मंत्रा। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra. We were discussing about market performance with our expert, Shri A.K. Bhattacharya, whom we call AKB as well on this program. So AKB, looking at the rupee, you mentioned about the depreciation of the rupee to the dollar. It is now 79.99. So 79 rupees and 99 paise. It's likely to breach the 80 rupee mark and even go up till 80 to 83 according to other experts across media outlets. So what's your take on the depreciation of the rupee and the imported inflation factor? The first point that we need to recognize about the rupee is that rupee has fallen by 7%
in the calendar to date, which is from January to now, the fall is by 7%. If you look at some of the major hard currencies in the world, starting with the yen, sterling pound, euro, South Korean won, you will see that the depreciation of these currencies against the US dollar has been much higher. I mean, the yen has depreciated against the dollar by 19%. Won has depreciated in double digits. Sterling pound has also depreciated much more than the 7% figure of the Indian rupee. What it means is that the Indian rupee has got cheaper compared to the US dollar, but it has got costlier compared to the sterling pound, South Korean won, Japanese yen, euro. What it means is that while we have a rupee as a currency weakening against the dollar, and that is because the world's all the dollars have flown back to the US. So naturally, when you have more supply and less demand, then the strength will show. Now, we must recognize this factor, number one. Number two, what is the real effective exchange rate of the Indian rupee? Right now, it is around 84, 85. So the worst case scenario is that if the nominal exchange rate of the rupee goes up and matches up to the REER, which is the real effective exchange rate, worst case scenario will be 85. Now, where we are is 80. Now, my sense is that Reserve Bank of India has used up, you can roughly say, around 19 or 20 billion dollars in the current financial year. And if you take from September to now, they have used up around almost, right now it is around $580 billion. In September, it used to be $640 billion. So around $60 billion money has been used. So RBI has used its arsenal to calibrate the fall of the rupee so that the market can absorb them. Now, my sense is the same kind of intervention will keep continuing happening. Even if the rupee falls, you will see that there is no jerk or there is no sharp fall so that the economy can take the shock. Final point is when the rupee falls, remember that your export sector benefits and there is a natural check on imports which acts as a safeguard for your overall external sector balances. जी, रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। अमेरिका में कंपनियों के मजबूत नतीजों के बाद शेयर बाजारों में तेजी का असर आज एशियाई शेयर बाजारों में भी देखा गया। जापान के निकेई में 2.7% का उछाल आया। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 1.7% की बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.7% और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1% की तेजी रही। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान ऊपर चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 0.2%, फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.5% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US stock market. US stock markets closed with sharp gains yesterday as more companies, including big banks, reported earnings better than forecast. Good company earnings offered some respite to investors who are worried about higher inflation and probable interest rate hikes by the US Fed. The Dow Jones gained 2.4%, the S&P 500 climbed 2.8%, and the Nasdaq Composite Index surged 3.1%. AKB, looking at the banking companies in the US which have posted good numbers, is it parallel to the banking sector in India because of the rise in the discount rate and the bank rate over there as well, and the operating costs not dependent upon the commodity cycle? I think the banking sector in the U.S. is reflecting certain robustness, largely because of the monies that have come back into the system, and their net interest margins have got better, and even though inflation is a record high in the last 40 years. The U.S. has never seen an inflation rate of over 9%. What you are continuing to see is domestic companies are investing, they are borrowing, and even though inflation is at a high level,
they are hiring. So what you was and they are, if they are afraid of anything, that is how the Fed starts reining in this overheating of the economy, so to say, by a further dose of repo rate hike. So very briefly, this inflation that is quoted, it's targeting consumers, or is it also targeting producers? Because their results are clearly in the green. Their operating costs are relatively low. Commodity prices have come down, except crude oil. So is this inflation hurting companies or the public? It's inflation always hurts both the public and the producers, but the consumers have no recourse in a situation of higher prices because they have to shell out more cash, more dollars in this case, but the producers can pass on that higher impact of higher inflation through higher increases or higher prices of the product they produce. Now, in this case, what it seems is happening, given the way the U.S. companies have come up with the results, and as the market is also captured in the U.S. market, is that the U.S. companies have been able to sell their goods at a higher price, absorbing the impact of inflation, and therefore and that is what is getting captured in the U.S. stock market's buoyancy in the last couple of days. Let's have a look at the oil market now. Oil prices today fell around 2%, pressured by global central bank efforts to tame inflation and ahead of expected builds in U.S. crude inventories as product demand weakens. In intraday trade, Brent crude was trading around $105.40 per barrel, while WTI crude prices were at around $102.20 per barrel. Even though the story suggests about demand weakening and we don't have figures in terms of what is being sold, the production figures, do you expect the price of crude to go sideways, go up, go down? Which way? To be honest, crude oil prices, I don't see there's a big risk of an upside, increase in the crude oil prices, because if you look at the overall recession outlook, that there is going to be some sort of a fall in demand, if not a complete recession in many of the world's developed economies. I don't see that the crude oil prices going up any further. Probably they will move sideways as you suggested. जी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में आज सोना 15 रुपए की मामूली वृद्धि से 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 20 रुपए की मजबूती से 55,745 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,723.80 प्रति औंस के स्तर पर, जबकि चांदी भी $18.70 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। भट्टाचार्य जी, सोने को लेकर के आपकी क्या संभावनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं? अगर इक्विटी मार्केट रिवाइव करती है तो मैं समझता हूं सोने की जो प्राइसेस की जो आउटलुक जो है उतनी ज्यादा पॉजिटिव हम नहीं समझ सकते हैं, वो ज्यादा उछाल हम आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यों ही इक्विटी मार्केट रिवाइव करेगी लोग, पूंजी निवेशक वो सोने में से हटकर इक्विटी मार्केट में जाएंगे। Thank you so much, AKB, for being with us on the program Market Mantra and giving us your views on market performance today. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. The key domestic share markets rise more than 1%. Sensex closes above the 55,400 level. Nifty regains the 16,500 mark. Global stock indices log gains following U.S. stocks after good company results. And Brent crude oil prices slipped to $105 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Namaskar.